Hello everyone. Today I am going to discuss the proof of the Green's theorem in a plane. The statement of the Green's theorem is let R be a closed bounded region in the xy plane whose boundary C consists of finitely many smooth curves. Let M and N be the continuous functions of x and y having continuous partial derivatives curl M by curl y and curl N by curl x in R. Then we are to prove that the double integral curl N by curl x minus curl M by curl y dx dy is equals to the line integral M dx plus N dy, where the line integral being taken as along the entire boundary C of the R. Okay, so let's just continue with its proof here. The proof is here. So we consider a curve here. Let's suppose the curve is this, any arbitrary curve, and suppose this is the x-axis, this is the y-axis, and this is the origin point here. And this curve, complete curve, is C, and it consists of the two parts, C1 and C2, where C1 represents the lower portion of this curve and C2 represents the upper portion of this curve. So we join these corner points. So let us suppose that this value is A and this value is B, and we take x be any arbitrary point in between A and B. So x is any point from A to B. So x वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो y की वैल्यू होएगी वो दोनों कर्व्स के ऊपर अलग अलग वैल्यू आएगी उसकी. सो मान लो हमारे पास जो x पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारे पास y की वैल्यू आई है और इस पॉइंट को हम यहाँ पे P2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Let's suppose the value of y is f2x over this point here. Okay, and suppose the curve C2 is represented as y is equals to f2x, where x is varying from A to B. And similarly, if we take the curve C1 represented by y is equals to f1 of x, where x is varying from A to B. तो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट होएगा, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज P1 हियर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे पास x, f1 ऑफ x. तो इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें. नाउ वी आर टू डू द इंटीग्रेशन हियर. सो फर्स्टली हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं द इंटेग्रल curl m by curl y into dy, where y is varying from f1x to f2x. ये y की लिमिट्स है हमारे पास. तो इसमें देखो m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है. सो आफ्टर डूइंग द इंटीग्रेशन वी गेट m that is a function of x and y, and the limits are y is varying from f1x to y is varying from f varying to f2x. So it will be equals to m of x f2x minus m of x f1x. So we have solved the integration curl m by curl y with respect to dy here. Now we will solve this integration with respect to dx here. So let's just solve that integration here. So now we integrate with respect to x from a to b, as the limits of y are varying from f1x to f2x and the limits of x are varying from a to b. So we get integration x is varying from a to b
integration f1x f2x curl m by curl y into dy into dx. So it will be equals to the integration of this value. So it will be integration from a to b into m of x f2x minus m of x f1x into dx. So again, if we interchange the limits in the first integral, so we get negative sign here. So it will be equals to minus of limits are from b to a m of x f2x into dx minus second wala integral as it is m of x f1 of x into dx. तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास वैल्यू थी इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f1 of x to f2 of x curl m by curl y into dy dx. Now the first integral, in the first integral we are moving from b to a. We are moving from the point b to a. So अगर हम b to a मूव कर रहे हैं इस कर्व के along, b से हमने a पॉइंट तक आना है. तो b से अगर हमने a पॉइंट तक आना है, ये हमारे पास b पॉइंट था, ये हमारे पास a पॉइंट है. तो हमने इसमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज. दैट मीन्स बी से लेके अगर हम ए तक आना चाहते हैं तो हमें C2 कर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग आना पड़ेगा. तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं दैट इट इज नथिंग बट द माइनस ऑफ C2. द C2 कर्व के अलॉन्ग हमने मूव करते हुए आना है m dx लिख दो. दैट इज ऑब्वियसली m इज अ फंक्शन ऑफ x एंड f2x माइनस. और a से b तक अगर हमने जाना हो तो a से b तक हमने फिर C1 कर्व के अलॉन्ग मूव करना है. सो माइनस ऑफ C1 m dx. तो इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे सो व्हाट वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ C1 m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C2 m dx. ठीक है, मतलब हमने कर्व पे मूव करना है C1 और C2 के लॉन्ग. जब हम C1 और C2 के लॉन्ग मूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंप्लीट कर्व आ जाएगी C कर्व. तो इसे हम लिख सकते हैं इट विल बी इक्वल्स टू माइनस द लाइन इंटेग्रल C m dx. दैट मीन्स हमने यहाँ तक प्रूफ कर लिया कि जो हमारे पास लाइन इंटेग्रल m dx है उसकी वैल्यू है हमारे पास, और ये जो हमारे पास लिमिट्स लिखी हुई हैं a से लेके b तक f1 ऑफ x f2 ऑफ x माइनस ऑफ, ये माइनस साइड हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, कर्ल m बाय कर्ल y इंटू dx dy. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल्स टू रीजन इंटीग्रल. ये सरफेस इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है ऑफ द रीजन r इंटू माइनस कर्ल m बाय कर्ल y इंटू dx dy. तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली. इसे मैं नेक्स्ट साइड पे लिख देती हूँ. So what we have solved here, we have proved that the line integral C along the curve line integral C, curve C, we are having this value is equals to double integral minus of curl m by curl y into dx into dy. Now similarly, we are to solve the line integral of n dy. So for this, since in this we have considered y as a function of x, and if we write x as a function of y, so then we get the value for the line integral n dy. For this we consider the diagram here again. And suppose that the given curve is like this. And again the complete curve is C here, which is composed of two parts, C1 and C2, where C1 represents the upper part of this curve
moving in the anti-clockwise direction, and C2 represents the lower part of this curve here. और इसमें हमने y की वैल्यू जो है वो चूज करनी है, तो y की वैल्यू मतलब हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम कितना है, लेट्स सपोज द वर्टिकल डिस्टेंस इज हियर and the minimum distance is vertical distance is this point, so this is d here and this is the c here, and we if we choose arbitrary point say y here, where y is any point lying in between c to d here, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये कर्व को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर हैविंग 2 वैल्यूज ऑफ x here, this will be the first value of x and this will be the second value of x. So let us suppose that this value is g1 corresponding to since this intersects at these 2 points, let's suppose this point is y1 and this is since this point is y1, let's suppose, and this is y2, where y1 will be equals to इसके पॉइंट्स हमारे पास क्या आएंगे, इसके पॉइंट्स आएंगे हमारे पास g1 ऑफ y, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x की वैल्यूज हमारे पास इसमें डिफरेंट होंगी, ठीक है, तो ये हमने ये पॉइंट लिख लिया g1 ऑफ y, एंड सिमिलरली y2 की वैल्यू हमारे पास होएगी g2 ओवर y. इसे हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, y1 y2 नहीं लिखते, इसे हम लिख लेते हैं दीज आर द पॉइंट्स p एंड q हियर, ठीक है, हमारे पास जो p पॉइंट की कर्व आई है वो हमारे पास आई है g1 ऑफ y, ठीक है, एंड सिमिलरली q पॉइंट की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई. अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसमें हम देख रहे हैं कि ये बेसिकली वैल्यू है x कोऑर्डिनेट की g1 ओवर y एंड दिस इज वैल्यू फॉर g2 ओवर y, वैल्यू ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा. तो p और q पॉइंट हमारे पास कौन कौन से आएंगे, p विल बी x जिसमें हमारे पास x की वैल्यू है g1 ओवर y और y कोऑर्डिनेट सेम है, एंड q पॉइंट हमारे पास होएगा g2 ओवर y कोऑर्डिनेट सेम है. सो इसमें अगेन कर्व जो है वो डैश लिख के हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सो दैट कि लास्ट प्रीवियस डायग्राम से कंफ्यूजन ना हो किसी को. तो हमारे पास ये दोनों कर्व्स यहाँ पे हमने मेंशन कर दी. जब हम इसे सेम वे से प्रोसीड करेंगे जैसे हमने लास्ट प्रोसीड किया था, सो वी आर हैविंग द लाइन इंटेग्रल along the curve complete C will be equals to n dy is equals to the line surface integral curl n by curl x into dx dy. Now we are to add these two equations. Which equations we are to add? This is the first equation and this is the second equation. We are to these two equations here. So adding 1 and 2, we get surface integral curl n by curl x minus curl n by curl y to dx dy is equals to the line integral m dx plus n dy. So hence this theorem is proved here. That was the Green's theorem. Okay, thank you so much.